आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है, तब खंडेराव मार्केट स्थित गुरुद्वारा में बच्चों को वीर बाल दिवस की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, जिस दौरान शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह की विशेष मौजूदगी वहां पर दर्ज की गई थी। साल 2022 में भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों की याद में मनाया जाता है। उनकी वीरता और पराक्रम के सामने बड़े बड़े वीर भी छोटे पड़ जाते हैं। तब वीर बाल दिवस को मनाते हुए वडोदरा भारतीय जनता पार्टी की ओर से खंडेराव मार्केट स्थित गुरुद्वारा में कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, जिसके तहत वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में बच्चों को जानकारियाँ दी गई थी। साथ ही वीर बाल दिवस मनाने से जुड़ी हुई प्रदर्शनी भी बच्चों को दिखाई गई थी। इस दौरान शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और साथ ही अकोटा विधानसभा की पूर्व विधायक सीमाबेन मोहिले के साथ स्थानीय नगर सेवकों की मौजूदगी वहां पर दर्ज की गई थी। आज समग्र राष्ट्र में वीर बाळ दिवस तरीके आजना दिवसनी उजवणी करवानुं 2022 थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदीजीना माध्यमथी शरूआत थई छे। शीख धर्मना 10मा गुरु गुरु गोविंद सिंहजीना बंने बाळको साहेबजादा बंने 7 वर्ष और 9 वर्षनी उंमरे एमणे पोताना धर्म माटे पोतानी जातनुं बलिदान आप्युं, पोते शहीद थया छे। तो आजनो आ विशेष शहीद दिवस के जेमां बाळको 7 वर्ष और 9 वर्षना होवाथी एमनो वीर बाळ दिवस तरीके आज उजवणी करवानो संकल्प कर्यो छे। वडोदरा शहरना 4 गुरुद्वारामां आज भारतीय जनता पार्टीनी टीमना माध्यमथी कार्यक्रमनुं आयोजन कर्युं छे। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति और प्राथमिक शाळाना बाळकोने एमना विषयनी माहिती मळे एटला माटे आ प्रदर्शनीनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। समग्र कार्यक्रमनुं संचालन जेमना माध्यमथी थई रह्युं छे एवा वडोदरा महानगरनी आ जवाबदारीमां आ वोर्डना मनीषभाई वाघ, आ वोर्डनी समग्र टीम અને અહીંયા ઉપસ્થિત પાર્ટીના સૌ કાર્યકર્તાઓને ખૂબ અભિનંદન આપું છું। 26 ડિસેમ્બર વીર બાલ દિવસ તરીકે ઉજવાઈ રહ્યા છે। આખા દેશમાં સાહેબજાદા જોરાવરસિંહજી અને સાહેબજાદે ફતેહસિંહ, જે એક 9 વર્ષનું બાળક હતું અને બીજું હતું 7 વર્ષનું, એનામાં શહાદત દિન તરીકે એમને ઉજવવામાં આવે છે। એમને ધર્મને સર્વોચ્ચ શિખર ઉપર લઈ જવા માટે અને ધર્મ માટે જે બલિદાન આપ્યું એ નાના છોકરાઓને પણ યાદ રહે અને આપણે કેવી રીતે આ સ્ટ્રોંગ થઈને આપણા ધર્મ માટે અને આપણા રાષ્ટ્ર માટે પરિશ્રમ કરવા જોઈએ એ એક ઉદાહરણ છે। જે આપણે જે બાળકો જે છે જે શહાદત આપી એમના માટે એક પ્રેરણા સ્વરૂપ રહે એના માટેનો આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી વીર બાલ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી। અને ખાસ કરીને જે શહાદત એમને 1705માં આપી હતી અને 26મી ડિસેમ્બરે એમને જિંદા દિવાલમાં ચણાવવામાં આવ્યા હતા અને મોટા મોટા લોક ચણાવવાથી બીતા હોય ત્યારે આ નાના બાળકોએ આપણા ગુરુ તેજ બહાદુર સિંહ અને સાથે સાથે આપણા પોતાના ગુરુ ગોવિંદ સિંહજીનું જે એક ઉદાહરણ આપણા મનમાં રાખ્યું અને એમને જે સંસ્કાર એમને આપેલા હતા, રાષ્ટ્ર એ સર્વોપરી અને સાથે સાથે ધર્મ એ સર્વોપરી, આ વિષય ધ્યાનમાં રાખીને એમને પોતાની પણ શહાદત આપી વિના એકદમ ડર્યા વગર એ આપણા માટે બાળકો માટે એક વીર दिन तरीके पर उजवવામાં આવે છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।